So, welcome to our podcast from Nurse Formula student team. My name is Saeed Monis Ali, और मैं currently Nurse Formula student team with team manager. And with me is Anika, marketing executive, Nurse Formula student team. So, हमारा podcast का इस बार का जो topic है, that is quite exhilarating, थोड़ा सा exciting है मेरे लिए भी और for our guest as well. Our guest is Sir Athar, who is the managing director of Happy Palace Grammar Schools and also overlooking academies as well. Our main topic is about FN in schools, उसका experience जो इन्होंने वहाँ जाके experience किया और सारी चीज़ें हुई. तो we will talk about it with Sir Athar and he will let us know about what he experienced and what the team experienced and all. So I will now ask Sir Athar to introduce himself a bit and talk about FN in schools in general. Thank you, Monis. Thank you for introducing me. I'm Barrister Athar Khan, and thank you for a wonderful introduction, Monis. You're our former student as well, mashallah. I'm really proud of you that you're here today taking my interview and asking about my experiences, what we had in Abu Dhabi with regards to the F1 in competition, जो कि एक ऐसा competition है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. But let me tell you something about me. I'm very passionate about education. I'm a barrister by education, and also when I came back to Pakistan, I did practice law. But after practicing law, I decided that I should make a bigger impact in the Pakistani society, a bigger social impact. So I decided to join a family-run institution by the name of Happy Palace Group of Schools and Colleges, and we recently established a school by the name of Academus International School. Both these schools will be participating in the F1 in Schools competition, and let's talk about it more. So, सबसे पहला on top of this one, why? What do you understand by FN schools? What is importance of FN schools in Pakistan community? So what I firstly, जब मुझे पहली दफ़ा introduction दी थी NFST की टीम ने, आप लोगों की टीम ने, और I was sold. I mean, you guys sold the idea इतने अच्छे से कि STEM education का जो खुलासा है, जो एक conclusion है, वो ये competition है. I say it is the epitome of all STEM competitions which are held throughout the world. और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करना एक बहुत प्राइड की बात थी. तो जब आप लोग हमारे पास आए थे 1 साल पहले एंड यू पिच्ड दिस आइडिया, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आप लोगों ने एक तो ये इनिशिएटिव लिया अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ. सो इट वाज अ वंडरफुल पिच. And we knew that we were doing robotics and coding already in our school, and we hold internal competitions within our school as well. Inter-school competitions में हमारे बच्चे participate करते हैं. They win a lot of accolades, but the real test is competing at a world stage, जो कि हमारा एक aim था कि हम अपने बच्चों को जब भेजेंगे इस competition के अंदर, तो they will be competing with the world. और एक बड़ी important aspect था इस competition का, जो कि this idea we said that it's a no-brainer, literally. And we did it, mashallah. F1 in Schools competition is that a lot of international schools all around the world, they come to a specific country. So this time it was Abu Dhabi. इनका एक Yas Marina circuit है, उसके अंदर they hold this competition. Different teams are selected within those schools, और फिर elimination method से वो आगे आते रहते हैं. And then they compete amongst each other in that Yas Marina circuit, जिसके different aspects है, which obviously we will talk about. Students के experience से हटकर, what was your own experience at Yas Marina और Abu Dhabi में, and कोई interesting incident या कोई ऐसी चीज़ आपने notice की हो जो that felt like a culture shock to you, कोई ऐसी चीज़ that you would like to share with us? So this competition was an interesting competition because the participants we had 6 team members. In 6 में से 5 of them never saw an airport even in their lives, never sat on a plane,
They never visited another city, let alone another country. So it was such a exciting experience for them, sitting on the plane for the first time, going to Abu Dhabi, uh, watching the Burj Khalifa live. So that was fantastic for them. So this was an interesting aspect of this competition, but it was not only a technical competition. इंजीनियरिंग का एक वो नहीं था ये कि सिर्फ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इसमें कवर हुआ था, बट इसमें एंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट भी कवर हुआ था, वेयर दी 6 स्टूडेंट्स हैड टू सेटअप देयर ओन बूथ्स फर्स्टली. उसकी मार्केटिंग इनको करनी थी. दे हैड टू गेट स्पॉन्सरशिप्स फॉर दिस इवेंट सो दैट दे कैन बी फंडेड. फोर्थली दे हैड ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड जिसके अंदर देवर सम पैनल ऑफ जजेस जो कि इनके कॉन्फिडेंस स्किल्स को जज कर रहे थे. इनकी तैयारी, इनकी प्रेपरेशन, किस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट A to Z एग्जीक्यूट किया, एंड देन दे वर स्कोर्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स. एक मेट्रिक उन्होंने जजेस ने सेट किए हुए थे. उन मेट्रिक्स के ऊपर अगर ये उतरते हैं तो दे वुड ईजिली सरपास और win that competition. So it was all these aspects together, and then there was a main race. The main race was a 20-meter board जिसके ऊपर they created a F1 miniature model. एक गाड़ी बनाई थी इन्होंने जिसके अंदर एक CO2 का कैनिस्टर लगता है, and through that the car competes with another car. अब उस एस्पेक्ट के अंदर it is not only कि आपने किस शेप की गाड़ी बनाई है, उसकी ड्रिफ्ट कितनी है, या उसके मटेरियल जो उसके अंदर यूज़ हुआ है गाड़ी में. इट वाज नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो रिएक्शन टाइम, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो कि हम अपने प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिखाते हैं और फिर इवेंचुअली उन स्किल्स को बिल्डअप करते हैं. सो जिस तरह मैंने शुरू में बोला था कि इट वाज ए कंक्लूजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टेम एजुकेशन जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और this was set on a world stage, an international stage. So that was a wonderful thing. Okay, that's really interesting to hear that students के साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस competition में. Another question I would like to ask, and we're all really curious about this, कि HPGS is one of the top 10 schools in Pakistan, and it has a really good reputation. What made you want to consider NFST as the mentors for the students in FNS schools, and what was the point about our team that sold it to you? Okay, so I would like to ask a counter question. Name 3 best universities in Pakistan in engineering, and NUST will come on top. NED will be there. There will be another university, Yep. but these 2 universities are the top universities for engineering. और प्लस ऐसे इनिशिएटिव्स लेना F1 इन स्कूल्स ऐसी कंट्री के अंदर जिसमें F1 की कोई नॉलेज नहीं है. सो ये एक ऐसी चीज़ थी, ऐसा चैलेंज आप लोगों ने उठाया था, एंड देन विनिंग बाय टेकिंग द कार मॉडल टू लंदन और टू दुबई इवन. ये आप लोगों की एक सक्सेस है. सो कैरिंग ऑन विद दैट सक्सेस एट यूनिवर्सिटी लेवल, आप लोग जब इसको स्कूल्स में आप लोगों ने पिच किया, विच नो यूनिवर्सिटी इज़ इवन थिंकिंग अबाउट गोइंग टू स्कूल्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि द स्टूडेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल्स दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स. बट देन प्रोजेक्ट्स लाइक दीज, कॉम्पिटिशन्स लाइक दीज, स्टूडेंट्स का इसके अंदर जब एक इंगेजमेंट होती है ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, it's easier for them to settle in to those universities जो कि ऐसे जिनका ऐसा कल्चर है, जिनके ऐसे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चे को हमें किस तरह से उसकी स्किल्स डेवलप करनी है. आपने जो बात की विच इज़ 100% ट्रू कि जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उनको बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं होता कि वो क्या करने के लिए आ रहे हैं. व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, व्हाट आर द चॉइसेस दे आर मेकिंग. तो ये वाली बात के अलावा व्हाट डू यू थिंक कि स्कूल्स, टीचर्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत इन होते हैं, तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि टू मेक दिस not a special task but a very common thing in Pakistan? Okay, so
अगेन इसी कंपटीशन की बात करते हुए इसका एक एस्पेक्ट था जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैड टू गो टू स्पॉन्सर्स वेयर दे हैड टू collect and raise funds to fund their whole trip, to fund their whole competition. So उसमें ये हुआ था कि whenever these students were going with their presentations, there was no market knowledge या entrepreneurs में या businesses में कि ये भी हो रहा है या हो सकता है. So there is a lot of trust deficit था एक between the industry leaders and the schools. So given that such competitions का इधर एक राइज आए पाकिस्तान के अंदर, ऐसे कॉम्पिटिशन्स और ज़्यादा हो ताकि इंडस्ट्री लीडर्स को भी रियलाइज़ हो और रिकग्नाइज़ करें ये कि इन कॉम्पिटिशन्स को वी शुड फंड, वी शुड सपोर्ट नॉट ओनली थ्रू देयर मनी बट थ्रू देयर मेंटोरशिप, थ्रू देयर फीडबैक. सो we faced a challenge, but we overcame that with the help of NUST. We self-funded these students initially. तो हमने ये कहा था कि हम पहले साल इसको fully fund करेंगे, so that next year once we have a story to tell, these industry leaders will be encouraged to support these teams not only financially but through their mentorship as well. So now we have seen that कि Furious One जैसी एक टीम माशाल्लाह जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन से एक टीम बनी हुई है. So how are you planning to plant what is this plant of STEM that you guys have made and how will you make it grow? ओके सो हम लोगों ने थ्रू आउट हमारी करिकुलम में ये एक पार्ट है रोबोटिक्स का, कोडिंग का, स्टेम एजुकेशन का. नॉट ओनली स्टेम बट ऑल्सो फाइनेंशियल लिटरेसी. इवन वी हैव अ सस्टेनेबिलिटी करिकुलम इन आवर स्कूल. सो आवर लॉन्ग टर्म प्लान इज़ दैट के बच्चे जो भी ग्रेजुएट करेंगे फ्रॉम स्कूल्स, नॉट यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम स्कूल्स, they should have those skills so that they can easily adapt to the new challenges which we're facing every single day. The world is changing. Before it was changing by the year, then it changed by months. Now it's changing by the second, literally. And these students need to realize that कि इस challenge को overcome करने के लिए degrees और स्कूल की जनरल पढ़ाई काम नहीं आएगी. अब काम आएगी तो स्किल्स काम आएंगे. अब अनस्किल्ड लेबर की डेफिनेशन में ये चीज़ आ गई है कि अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग अ डिग्री बट डज नॉट हैव एनी स्किल इज़ कॉल्ड एन अनस्किल्ड लेबर. नाउ स्किल्ड लेबर वो है जिसके पास एक एडिशनल एक्स फैक्टर है, लाइक दैट दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू स्टेम एजुकेशन फॉर इंस्टेंस. they have been exposed to competitions like these. So these are some skills which are necessary for students now, and Happy Palace Grammar School and Academies International School are thriving in that aspect. Okay, so आपने वहाँ जाके experience किया and you saw what they are doing, what the world is doing right now. So आपको क्या लगता है, what are the main differences in the student life of a Pakistani student and an international, कोई सी भी country का कोई student हो जो वहाँ पे compete कर रहा था? On that. So nothing against those schools who are doing STEM education but they're not doing properly. अभी मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि with the advent of AI, artificial intelligence, with the advent of few more courses like Python or data analysis or prompt engineering, अभी इस वक्त स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन स्कूल्स के जिनके लीडर्स विजनरी नहीं हैं, who are in this industry just to make money, they're wasting the time of our future generation. ये जो क्लास में बच्चा बैठा हुआ है ना, मैं बल्कि इस पॉडकास्ट के थ्रू अपील भी करूँगा, do not waste these students time because it's very important. हमारी यूथ की जो परसेंटेज है जो कि वर्क फोर्स में एंटर होने जा रही है वो 35 से 40% एक हमारी पॉपुलेशन है यूथ की जो कि वर्क फोर्स में एंटर करने जा रही है. सम से इट्स 50-60%. रिगार्डलेस इट्स अ ह्यूज नंबर. स्कूल्स के ऊपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ वी डूइंग स्टेम एजुकेशन प्रॉपरली. हम लोग प्री प्राइमरी स्टेज से इनको लेके चलते हैं बच्चों को और आगे तक लेके जाते हैं. एंड दिस कॉम्पिटिशन इज़ एन एविडेंस इन इट सेल्फ दैट हम लोगों ने किस तरह से स्टेम को आगे लेके जाना है, प्रमोट करना है, बच्चों में इनग्रेन करना है, इनकरेज करना है थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग,
through activity-based learning, through these things. So it's not only the traditional curriculum now, it is all these things now, right now as well. So these schools, unfortunately, private schools बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. But I'm open to discussing with them how to do it better and how to do it effectively. Do not waste time of the future generation of Pakistan. That would be my plea. सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने बहुत मतलब आपको याद हो, बड़े दिल से याद हो कि भाई ये एक वाक़या था जो मुझे आई गेस पूरी लाइफ तक याद रहेगा इन दिस कंपटीशन. देखिए, सो डे इन एंड डे आउट मेरा काम ही यही है कि जो हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दे हैव अ competitive advantage over these students who are studying in international schools around the world. So मेरा तो यही एम है, यही ऑब्जेक्टिव है, और मैं इसके लिए अपनी दिन रात आई हैव डेडिकेटेड ऑन दिस एस्पेक्ट. लुकिंग एट दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जब मेरे बच्चे उनके साथ compete कर रहे थे तो दे वर नो लेस देन देम. सो हमारे बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव दी अपॉर्चुनिटी. अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी दे दी, जिस तरह से NSFT मेरे पास लेकर आई ये अपॉर्चुनिटी, जिस तरह थ्रू नास्ट, ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे बच्चों को भी मिलेगी विद द राइट गाइडेंस, दे कैन एक्सेल इन एनी कंपटीशन एट एनी वर्ल्ड स्टेज. सो ये एक मुझे डिफरेंस लगा कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे बच्चों के पास, तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देनी है. मेरे बच्चे गए in this competition. My team was called Furious One, and you will be happy to know, and I'm very proud, and I quote it anywhere I go, that they got a 3rd position in the international category competition. और उसके अंदर there were 10 international teams, local दुबई और अबू धाबी, अजमान, शारजा के तो international schools आए हुए थे, but there were some 10 international schools from countries like Brazil, रशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर. इन इस लेवल के ये डेवलप्ड नेशंस हैं. इधर के स्कूल के बच्चे आए, compete किए, और हमारी फ्यूरियस वन जो कि एक डेवलपिंग नेशन से गई थी, we secured the 3rd position, which is a proud moment for this nation as well. Not only for our school, not only for us, but for our country as well. सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने बहुत मतलब आपको याद हो, बड़े दिल से याद हो कि भाई ये एक वाक़या था जो मुझे आई गेस पूरी लाइफ तक याद रहेगा इन दिस कंपटीशन. So there were many instances. We were there for 3 days in Abu Dhabi, और 2 दिन शुरू के तो हम लोगों ने competition में गुजारे, and I was with these students 24/7. So literally, because there's a teacher needed, there should be a mentor with the team going to an international country, or especially for those students जो कि जिन्होंने foreign country कभी देखी नहीं है, so they don't know the processes, how to take public transport, how to take taxis, going to restaurants, how to place orders. Yes, they do that in Pakistan, but in a foreign country it's a bit difficult. You might feel shy about it. So a mentor is needed in such aspects. So what happened was, as I told you before, that 5 of these 6 students never sat on a plane. So 2 of these students had anxiety issues, they were having panic attacks. So I had a chat with them कि this is not it, और हम लोग कोई competition में जा रहे हैं, you should feel confident about it and rather feel excited about it. Once we entered the competition, they saw a lot of international students, उनके अपने booths बने हुए थे, उनकी अपनी एक pit booth होता है, वो इस competition का एक aspect है. They were setting up that booth, and they were looking at these other booths as well कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं. But we were so well prepared that ये बच्चे were confident. My team, Furious One की team, they were really confident कि जब हम ये pit booth लगाएंगे, so लोग भी उसी तरह इसकी तारीफ़ करेंगे जिस तरह से बाकियों की तारीफ़ हो रही है. And then before the competition, everybody was nervous because this was the first time they were testing the car. और unfortunately पाकिस्तान के अंदर वो facility नहीं है that we tested our model with that 20-meter race track. Other people had that advantage. So the students mentioned to me कि हमारे पास तो ये advantage नहीं है. What happens if we press the button and the tires fly out of the track? So I said, don't worry. The fact
you're in this competition. Today you're standing in that Yas Marina circuit in Abu Dhabi amongst these international students, these big international schools. You have already won this competition. And mashallah say the whole F1 team sponsored by EdNoc, जो भी उधर mentors थे, teachers थे and whatnot, they were all praising ke, oh, there's a team from Pakistan which came to Abu Dhabi, we should welcome them. So they made me meet a lot of organizers and main people. और हम लोग जब उनसे मिले बड़ी रिस्पेक्ट मिली, बड़ी इज़्ज़त मिली, बच्चों को बड़ी रिस्पेक्ट मिली, बड़ी इज़्ज़त मिली. उनका एक माइंडसेट चेंज हो गया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सब बुरा समझते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई टीम आ रही है तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, उसको इनकरेजमेंट मिलती है कि ये लोग भी आगे हैं, इनके पास भरपूर टैलेंट भरा हुआ है. Their acumen is great, their IQ is great, their EQ is great. So, or our students gelled in with the other international students as well. और ये एक एस्पेक्ट था जो कि बड़ा अच्छा एस्पेक्ट था, जो कि मुझे बड़ा पसंद आया कि how we participated, how we interacted with these international teams, how we executed, and माशाल्लाह जो भी फेयर्स थे सारे कि टायर उड़ जाएगा तो हमारी रेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, all were gone because we did complete the race. We did complete the competition. And all 6 of them, they were giving media interviews as well to media channels of Abu Dhabi. They saw the whole Abu Dhabi circuit as well, जो कि एक circuit होता है ऐसा जो कि F1 के main final competition में अक्सर अबू धाबी का circuit ही use होता है. So they were all fascinated and all in awe that we're at such a fantastic place.